Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Ritesh. Good morning, Ramesh. Jai Shri Krishna. कैसे हो? कल की वीडियो आपको समझ में आई होगी, रमेश, right? The one which we did in the members. Rejection कहाँ से लिया, कहाँ तक? Did it follow the rule? Good morning, Anurag. Keep the charts clean, guys. We'll start in 2 minutes. Good morning, Sudhir. जो भी डाउट से पूछ लो. बीटीसी हम लॉन्ग तभी देखेंगे जब एक अलोकेशन रीडेवलपमेंट में दिखेगा. दिस इज स्टिल इन आवर जोन. सो हर एक मूवमेंट एक्शन प्लान जो हमको चाहिए वैसा ही है. तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अ सिंगल बिट ऑफ प्लान इन बीटीसी. ओके. गुड मॉर्निंग आर्या. जब तक हमें प्रॉपर हाई वॉल्यूम स्पाइक, जब तक हमें प्रॉपर त्रिशूल 1 आवर में उसके साथ एक कंसोलिडेटिव थ्री विंग सेटअप या S2B1 सेटअप फॉर्मेशन दिखेगी, तभी ही हम देखेंगे, उससे पहले नहीं. So we'll come to BTC later on. So let's start with gold. Okay. So किसी को भी कोई डाउट नहीं है? पर्सनल डाउट्स ऑफ गोल्ड एनालिसिस और BTC एनालिसिस है तो पूछ लेना. Right? So there's no response. So what we're doing, we'll be starting with the analysis. You have to understand major thing. बोथ लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि ये मूवमेंट कैसे कैप्चर करें. जो लोग मूवमेंट कैप्चर नहीं किए, दैट्स टोटली फाइन. बट आप लोगों को एक ही चीज के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना था. वेयर इज द नियरेस्ट लिक्विडिटी ग्रैप पॉइंट? द नियरेस्ट लिक्विडिटी ग्रैप पॉइंट वाज ऑन दिस कैंडल which is LG point. With the LG point, market tend to reactivate the structure. यहाँ पे reactivation कैसे हुए structure के, right? So there are two ways of looking into the market in yesterday's session. First, we had a three wing setup, 1, 2, 3. With the three wing, we'll be looking for one strong green candle. With that one strong green candle, continuity in the moment. जो कि हमारे हिसाब से यहाँ पे सप्लाई 200% कंप्लीट हुई. सप्लाई 200% कैसे कंप्लीट हुई? इफ यू लुक इनटू द पर्सपेक्टिव, which is the supply that we'll be working on? This is the supply that we'll be working. So high week range है तो नीचे से मैपिंग होगा. So with that allocation till 200%. उसके बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए था क्योंकि इंटैक्ट लेवल कंप्लीट नहीं हुई थी यहाँ पे, राइट? उसी इंटैक्ट लेवल के साथ मार्केट फिर से नीचे आके कंटिन्यू किया था पोस्ट कंप्लीशन ऑफ मिनिमलिटी M2, राइट? सो जैसे ही मिनिमलिटी M2 कंप्लीट हुआ, we had got another three wing setup at the formation. Slow and steadily market ऊपर गया, but अगर आप नोटिस करते हो न्यूयॉर्क PM सेशन में यहाँ पे फिर से 3 wing फॉर्म हुई थी. Why did it trap?
It trapped because there was no high volume range nor it was near any rejection point. जब कोई रिजेक्शन पॉइंट में नहीं रहता है तो मार्केट डेफिनेटली वहां से ट्रैप करके कंटिन्यू करेगी इन द डायरेक्शन, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, आइसबर्ग जोन में जब जब मार्केट आता है तब तब मार्केट विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय द रिटेलर्स पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग गोइंग टुवर्ड्स द शॉर्ट. फिब लेवल लगा के देख लो, ये 0.7 लेवल है, राइट? ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा उनके हिसाब से. एंड इन कंटिन्यूटी व्हाट डिड मार्केट डू? मार्केट फॉलो थ्रू. जब मार्केट फॉलो थ्रू में आया, so what are the next steps that you will be looking for? A new supply and mapping, right? So in this न्यूयॉर्क पीएम सेशन का आज का दिन का अलोकेशन मैप करके चलेंगे. So starting from this point, when we started to map, what do we notice? We notice a M2 formation. With M2 formation, what is the targets that we have always, sorry, not almost, that is 200%, right? So with 200% of M2 target, what are the next steps that we look into the perspectives, right? So there are two ways of looking into the mapping structure. मार्केट क्या डिमांड फॉलो करके चला? यस, राइट. इन दिस सिनेरियो दिस इज द डिमांड व्हाट विल बी टेकिंग एंड रीमैपिंग दिस एट द करंट पॉइंट, राइट? हाई विक रेंज नहीं है तो कहाँ से लेंगे? बॉडीज. 100% रिजेक्शन. जब 100% रिजेक्शन लिया, विच इज द न्यू मैपिंग दैट कम्स इनटू द प्ले? द 100% ऑफ द सप्लाई जो कि ए रेंज ऑफ मोशन में डेवलप होते हुए दिखेगी बिकॉज इट वाज नियर द M2 formation, right? M2 formation के साथ what are the next steps that you guys will be working on here, right? The new elaborative point for today's scenario. तो आज का दिन का एशियन सेशन के लिए the nearest first come first serve supply जो है that is this moment. जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सप्लाई अलॉट हुआ है, what is the next thing that we look for? ओके, डिमांड कहाँ तक आएगा? नियरेस्ट इंटैक्ट लेवल. हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से अगेन, बिकॉज पीओआई रेंज ऑफ मोशन में है. मार्केट gave a break towards the short, right? With the short there is a minimality M1 formation. With the formation 150% target complete, right? So with 150% target completed, what was the first come first serve that we took in the action plan to map? We took a consolidative supply which was in the action of this person, right? So when we mark it from the wick, what do we notice? We notice a M1 formation. Why M1 formation? क्योंकि 50% पहले से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन डेवलप किया था. उसी रिजेक्शन के साथ मार्केट का फर्स्ट टारगेट 150% होगा, सेकेंड टारगेट 200. In this scenario, market tend to take a small retracement from the point. With the small retracement of the point, what is the next step? Break and continue. Break and continue. Target is 200, right? So this is minimality M1 200% जो कि हमें आज का दिन में दिखने को मिली, right? इसके साथ what are the next major things that you have to keep in mind? Liquidity grab candle which is being generated in today's scenario, right? LG point उसके साथ intact है. Not all the intact is completed, so definitely you could see a movement coming down, right? मतलब retracement movement नीचे की तरफ देख सकते हो 150 pips से 200 pips का. How will you allot in the first place? The first allocation will be first come first serve. Second allocation will be the second serving. Okay. So this is gold. कोई भी doubt है, please do ask in the comments so that I can help you out in understanding that. Good morning, Suresh ji. सर कल जब मार्केट गिरी थी लेवल कंप्लीट होने पर, पहली ही ग्रीन कैंडल जिस पर हाई विक थी पर ट्रेड किया था बट एसएल आ गया. द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पर ट्रेड किया तो अच्छा टारगेट आया.
सर ऐसे कैसे, सर इससे कैसे बचे, प्लीज गाइड। रमेश, जहाँ पे आपका एसएल गया, प्लीज लेट मी नो कहाँ पे एसएल गया आपका, राइट? उस हिसाब से आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट। आई वांट टू नो व्हिच डिमांड वाज कंसिडर्ड फॉर द बिग कैंडल ऑफ यस्टरडे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विंग होने के बाद जो डिमांड आता है सेकंड सर्विंग में, दैट विल बी द allocation of the demand what you'll be working on, right, Anurag? So in perspective, this allocation is of 1 hour, 100% demand. एक ओके ओके, कहाँ तक हुआ था? 11:45 AM candle taken itself, IST 11:45. एंट्री कहाँ पे हुई थी? Which candle you entered in? Ramesh, that is the question. Sir, hypothetically, what indication we could have had to stay and look for short? Just trying to understand the other side of this scenario. There was no other side of the scenario. Exactly, there was a pattern formed of three wing, setup three. उसके साथ continuity in the movement में drop हुआ mark. Okay, but in 1 hour also it was more than the fall. Okay, let's check. Right? So to identify this fall, what are the major things that you will be looking over here? The major allocation was in perspective of first come first serve. First come first serve के हिसाब से the allocation point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This entire movement was one demand allocation, right? When this entire movement was in one demand allocation, what is the nearest thing that you will be looking for? Second serving. Where is the second serving? Second serving is played from this retracement point to the nearest. Let's map and check.
ब्यूटीफुल ड्रॉप गाइस। अंबिका एमटीएसएल स्टार्ट करो। 220 pips running. Just make sure you guys follow a proper MTSL. अगस्त्या सिस्टम ट्रेलिंग लगाओ यार, 1000 बार बोल चुका हूँ. Right, so this is the demand what we had played as second serving to allot the moment. Okay, with this allocation I'll just change the color so that you'll come to know exactly what is the point of view that the market has redeveloped. Is it the exact rejection point that we had at this point, right? So this is the major point of interest that we had worked on yesterday's scenario. Right, keeping in mind हमारे पास यहाँ पे 3 wing setup था, उसके साथ M2 formation भी था, but हमने short क्यों नहीं किए 1 hour में high volume again, right? Which deliberately with the LG point market created a reversal point, right? Entire iceberg zone में थी market movement, एक second दिखा दो, right? So entire movement was in the formation of iceberg U. 1, 2. This candle had a high volume, hence the market tend to take the reversal. So we had been in the same direction. Okay, beautiful drop, guys. Keep it up. I first serve and second serve with both got completed and failed. It never failed. 11:45 am IST candle close होने पर entry थी. क्लोज होने पर एंट्री थी. रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन रमेश, अगर यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन हाई विक रेंज है करके एंट्री हुआ था, then you are in a wrong place, right? So if you are looking in perspective of execution, right? So what is the next thing that you will be working on, right? The next thing you'll be working on is a setup. Ramesh ji, setup को follow करो. With the right directional setup, execution comes into the play. Okay? सो आपने जो इस कैंडल पे एंट्री लिया था, एक कैंडल मिला के 3 विंग फॉर्म हुआ ना, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल में आपका ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, इस कैंडल में नहीं, राइट? दिस इज इंडिकेशन दैट मार्केट कुड रिवर्स, राइट? बट एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव एक सेटअप फॉर्मेशन के बाद ही होना चाहिए, सो वर्क ऑन दैट फॉर्मेशन. एक बार हुआ है, आपके पास सिर्फ 2 और गलतियां करने की मौका है, उसके बाद नहीं. If you're repeating it again, that's deliberate action plan which you'll be working on. 220 pips running, but in which scenario we need to take all this small demand and combine them? As in normal scenario, we don't do this. There is a 3 wing setup formation. Setup 3. When 3 wing formation setup 3 forms, the nearest liquidity point will be the first target. What do you mean by iceberg zones? Can you please give an example? Definitely, Ankit. Are you 100% with allotting minimality CM2s? Are you 100% with allotting supply and demand? Are you 100% with allotting TTS 2.0? If yes, batao. I'll definitely let you know what size per order. Sir, how do we identify LG points? The LG points can be looked in perspective of
the allocations where the market is not being in a high formation zone, मतलब जब विक क्रिएट नहीं होते हुए दिखती है, राइट? यहाँ पे छोटा विक है, चलेगा, राइट? बट इस मूवमेंट में आज के दिन की 3:30 सुबह की मूवमेंट में अगर नोटिस करोगे, विक नहीं है, मतलब मेजर prosperous allocations will be considered to allocate, drop the market till that point, from here continue. Because ये जो movement है ना, ये movement के साथ major liquidity allocation इस zone of action में होता है. जैसे ही इस zone of action में आएगा, then you will see the continuity in the movement again. Okay? So that is LG point. LG point has been created right now, so it will tend to go up. There is no LG point in this current candle area. This is a proper candle. It has a wick. See, it has a wick on the top. If you notice this green candle of 4141, this doesn't have a wick. So market will tend to come down till that point. Okay, Ramesh, hope you got the point. जैसे ही डिमांड मार्क किया, मार्केट took the retracement. वाह, happy for you, brother. सर थैंक यू सो मच. आपकी हेल्प एंड सपोर्ट की वजह से 300 पिप्स का टारगेट लिया. 12:15 कैंडल क्लोज होने पर अगेन एंट्री किया था. दैट वाज अ प्रॉपर सेटअप. आई एग्री टू दैट. ओके, मेरा नहीं आपका सर. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग सर. न्यू सब्सक्राइबर. गुड मॉर्निंग रामपुरम. रामपुरम, गुड मॉर्निंग. Stream will be there for next 10 minutes. जो भी doubts है, please do ask. Yes, sir, I understood my mistake. I'll work on that. Perfect. Everyone, thank you for watching the stream. Thank you for taking the time and executing the right learnings in the market. Thank you. Sudhir का एक question था ना? क्या था सुधीर का question? How to know intact completed or not? If you're identifying a rejection from the same point, from the intact levels, first rejection, second rejection, third setup execution, then समझ लेना वो intact complete हो चुका है. ठीक है?
Sir, can you explain MTSL and system trailing? MTSL is a mind trailing where you follow post a certain pips. System trailing Asian session we follow of 20 pips range movement. एग्जीक्यूशन के हिसाब से 20 पिप्स एशियन सेशन में एसएल रहता है, लंदन न्यूयॉर्क सेशन में 40 पिप्स का होता है. उसके साथ जब कंटिन्यूटी में ड्राफ्ट होती है in the direction, then every 40 pips or 20 pips we trail the MTSLs with pursuance of 100 pips plus system trailing start होती है with 20 to 40 pips of allocation. Got it. So what are characteristics of different sessions? भाई स्टेप बाय स्टेप चलना तो आ रहा. एक ही साथ में बड़ा छलांग लगाने जाओगे, राइट, सीधा जाके खाई में गिरोगे. स्टेप बाय स्टेप, right? If you want to be a mechanical engineer, you can't directly get into aligning or manufacturing of the cars. You have to know how to mold the metal first, then how to redesign, how to create the engine. With creation of the engine, which caliber of V12, V6, V8 is being used. With that, you have to know how the components of AC works, right? Then you can work on creating a car for yourself. So step by step. Sir, how will be looking into volumes during short yesterday? We won't be looking for volume towards just a short. यहाँ पे हमको एक ही चीज करना था, क्योंकि कल की वीडियो में भी क्लियर कट बोले थे हम, एशियन सेशन में ही बोले थे कि मार्केट एक ड्रॉप लेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगी. वो ड्रॉप हमें न्यूयॉर्क सेशन में मिला था. तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जब तक एक सस्टेनेबल मूवमेंट डेवलप होते हुए नहीं दिखती है, विल नॉट बी लुकिंग फॉर एन एग्जीक्यूशन पर्सोना. अगर वॉल्यूम जैसे ही नीचे का 1 आवर का डिमांड या टारगेट के पास आके रिजेक्शन लेते हुए दिखा है तुम्हें, तो समझ लो वहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है, अगर एलजी पॉइंट और इंटैक्ट लेवल कंप्लीट हो चुके. ठीक है. Sir, when will available the book in India, sir? You can message in Telegram. They will help you buy the book. Okay.
Stream will be there for next 5 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. BTC में आईडी नहीं है फैजा देखो ये मत ठीक है आईडी एग्जीक्यूशन सिर्फ बोर्ड में देखो बीटीसी में सिर्फ स्विंग में लो गुड मॉर्निंग स्मिता मैम yes it is but start implying post Diwali एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो देयर वर फ्यू पीपल हु आर वर्किंग ऑन इंडियन मार्केट्स उनके लिए दिखा रहे थे राइट exact rejections from the same point just not Nifty Banknifty as right exact closures exact movement exact retracement exact intact levels we are just waiting Diwali होने दो funds allot होने दो उसके बाद trade off execution we'll be back with Indian market for next 3 months any script of this world you can bring me it will work with TTS concept so everyone keep one thing in mind all the new members 6 months of back testing 6 months of forward testing 1 month of live analysis bring a small capital develop that capital compound it with compounding you have to understand one thing that is risk to reward protect your capital while protecting your capital try to take calculative risk don't keep your mindset in greed FOMO or in fear. How do you remove that? You can remove it through only one thing meditating and reading books can keep your mind calm. With that, learn to wait, have patience in the market. When you have patience in the market, you will be able to execute the right trades and you won't be taking a FOMO execution trades, right? With that, always keep in mind it's your hard earned money. Try to deploy it with learnings, post learning, remove the L and earn, right? With that, fear को हटाओ, डर को हटाओ, डर को हटाने के बाद देखो जिंदगी कैसी बदलती है. This is Nitesh signing off. Members सेशन के लिए कल मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय.